दिस इज एक्चुअली वेरी स्केरी। फास्ट फूड फास्ट मिल जाता है, बट जो हेल्दी फूड है वो बहुत महंगा है। हमारे ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं ऐसे खाने खा के रोज रोज, उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ये तो एक छोटा सा वीडियो दिखाया मैंने आपको। हे गाइस, तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप 30 दिन के लिए कंटिन्यूअसली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो आपके ब्रेन को क्या होता है। अब आजकल फ्लेक्सिबल डाइटिंग बहुत फेमस हो रही है। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड IIFYM, और इफ इट फिट्स योर मैक्रोस। इसका गोल ये है कि ये बोलता है आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है दिन की, उसके अंदर अगर आप कुछ भी खाते हो इट शुड फिट दोज, एंड उससे यू विल गेट टू योर गोल्स नो मैटर व्हाट यू ईट। अब इवन दो इसके साथ थोड़े रूल्स हैं जो बोलते हैं 80% क्लीन खाओ, 20% ट्राई टू ईट व्हाटएवर यू वांट, लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया है। लोग सोचते हैं कि वो पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज एटसेट्रा, कुछ भी चिप्स विप्स भर सकते हैं टिल इट फिट्स देयर कैलोरीज। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, अगर वो पिज्जा खाता है, होल पिज्जा जो उसको 2000 कैलोरीज देता है, एंड पुट्स हिम इन अ 500 कैलोरी डेफिसिट, विल ही लूज वेट? यस ही विल। But is that the right way to go about it? Is that healthy? Are you getting all the micronutrients you need? क्या आप मेंटली ठीक होगे? क्या आपके हार्मोन्स नॉर्मल होंगे? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगे डॉक्टर क्रिस वैन टर्लिकन। सो क्रिस इज अ डॉक्टर जो यूके में रहते हैं। उन्होंने 30 डे का एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर, वेयर ही एट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड फॉर 30 डेज स्ट्रेट। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? देखो, अगर आप जैम को ब्रेड पे लगाते हो वो भी प्रोसेस्ड होता ही है, पीनट बटर भी प्रोसेस्ड है, बट हम यहां बात कर रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की। फॉर एग्जांपल ऑल द जंक फूड्स यू गेट आउट इन द मार्केट, पिज्जा, बर्गर, मैगी एटसेट्रा। इनका वीडियो मैं चलाने वाला हूं, एंड साथ साथ आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस इन दीज 30 डेज विद हिम। I hope you enjoy. I'm going to switch from my normal healthy diet. It's pretty healthy. I eat about 20% ultra processed food to an 80% ultra processed food diet. And that is the same diet. It sounds extreme, but it's the same diet that around 1 in 5 people in the UK eat. So I want to find out if changing, just doing nothing but changing the proportion of ultra processed food in my diet has any effect on my health. ओके, सो इन्होंने यहाँ पे बताया 80% ही ट्राइज टू कीप हिज डाइट वेरी क्लीन, बट 20% वो कुछ भी खाते हैं। बट फॉर दिस वीडियो इज गोना स्विच टू 80% से भी ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एवरी डे। My experiment will be run by one of Britain's top obesity experts to make sure the results will be scientifically valid. ओके, सो ये अकेले घर बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, इन्होंने इंक्लूड किया है एक ओबेसिटी एक्सपर्ट को। ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है। इनके ब्लड मार्कर्स, इनके ब्रेन स्कैन्स एंड इनके हार्मोन लेवल्स भी चेक किए जाएंगे एट द एंड एंड इन द बिगिनिंग। हम सबका ब्रेक डाउन करेंगे, तो एंड तक देखना। My first meal is a national favourite. Fried chicken. It's the end of the first day. I don't want anyone to interrupt my... Oh my god. It's really good. But hot. It's crunchy on the outside and salty and quite peppery. The chicken's moist. What makes it ultra processed is the chemicals that are added, like monosodium glutamate, sodium phosphates, and spice extracts, to name just a few. Is it good? It's like tickling some weird bit of my brain. It's like crisps. It's Keep going. This is my crisps. मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम फॉस्फेट एंड स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स। मोनोसोडियम ग्लूटामेट और MSG क्या होता है? मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं। अजीनोमोटो, ये ज्यादा कॉमनली सुना होगा आपने, ऑलमोस्ट सबके घर में मिल जाता है, आपके घर में भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अब MSG एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। पुरानी स्टडीज है जो बोलती है इट्स वेरी अनसेफ, नई स्टडीज है जो बोलती है इट्स सेफ, बट वी नीड मोर स्टडीज ऑन ह्यूमंस। सो ये MSG का अनसेफ टाइटल आया कहां से? 1960 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट होमैन क्वॉक। ये एक दिन एक चाइनीज रेस्टोरेंट गए, जब वापस आए तो उनका पेट बहुत खराब हो गया था। इन्होंने अज्यूम किया वो या तो अल्कोहल से हुआ है या MSG से हुआ है, एंड डिक्लेयर एंड में कर दिया कि MSG से हुआ है, बिकॉज अल्कोहल को कभी कोई ब्लेम करता ही नहीं है ना। उसके बाद MSG के टेस्ट्स होने शुरू हुए। इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में यूज किया गया इसको टेस्ट करने के लिए, जितना खाने में डाल भी नहीं सकते। MSG से ये देखा गया है कि अगर आप MSG खाते हो अपने खाने के साथ, आपका जो ग्रेलिन है उसको बढ़ा देता है, सो आप ज्यादा खा पाते हो और आपका जल्दी पेट नहीं भरता। बट एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन रिच डाइट में MSG ऐड करते हो, यू फील फुलर फॉर लॉन्गर, बट वो प्रोटीन अकेले ही कर देता है। सो आई डोंट थिंक MSG का कोई काम था वहां पे।
मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर MSG यूज कर रहे हो खाने में लिमिट करो, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं सोडियम फॉस्फेट की, जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। सोडियम फॉस्फेट होता है एक मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इस पे भी ज्यादा स्टडीज अवेलेबल नहीं है। ये खाने को लंबा टाइम फ्रेश रखने के लिए यूज होता है, एंड बहुत सारी जो चेन्स हैं खाने की वो इसको यूज करती हैं टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ देयर फूड। The reason I eat these lasagnas the whole time is because they're tasty. They are really quick. You've got to admire the science that goes into this. Sort of stringy, cheesy bits. I know I'm going to finish this and immediately want another one. 3-4 दिन में ही बंदा फूड ही लगने लग गया है। बेचारे के मुंह में पानी आ रहा है खाने के बारे में बात करते हुए। The rules of my experiment are that I eat whenever I feel hungry, which is what I always do. But previously, that meant eating 3 meals a day with the occasional snack. Now, I find myself craving food much more often. ओके, सो 6 दिन हो गए हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है इन्होंने। ये कह रहे हैं पहले ये तभी खाते थे जब इनको भूख लगती थी, अभी भी ये यही कर रहे हैं। पहले ये खाते थे 3 meals with 1 small snack बिकॉज इतनी भूख नहीं लगती थी, बट अब ही इज ऑलवेज ईटिंग। ही सेज ही फील्स हंग्री ऑल द टाइम। दैट इज बिकॉज समथिंग फनी इज हैपनिंग इन हिज ब्रेन, जो आपको एंड में पता चलेगा। I'm entering week 2 of my changed diet. Now, what I'm having, Lyra, is a stuffed crust meat feast pizza. Goodness. I never would have thought of this, but when you read this very long list of ingredients, it just makes you think much more deeply about, like, what am I tasting? And what are they trying to get me to taste? And how does this all feel in my mouth? This is definitely what the scientific papers call hyperpalatable. So it's just really, really, really eatable, delicious food. It's really hard to stop eating. And part of that is because it's so soft. It's like it's got a crunchy bit. Well, you don't have to chew hard. I'm not getting tired. हाइपर पैलेटेबल फूड्स वो होते हैं जो आप कितना भी खा लो आपका पेट नहीं भरता। दिस यूजुअली हैपेंस विद फूड्स दैट आर हाई इन फैट्स एंड शुगर और फैट्स एंड अ लॉट ऑफ सॉल्ट। You are a pooing baby. I'm gonna pick you up so you can poo in comfort. Sorry. I'm having the opposite problem from baby Sasha. I don't know what this is about. This is just a video of me not having a poo. But needing a poo. I'm definitely gonna get piles. Foods high in refined wheat flour और मैदा एंड जो और इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे खानों में, उसके अंदर ना तो इतना फाइबर होता है ना और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो दीज मे कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज एंड आपको वॉशरूम में प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे नॉट हैव अ बाउल मूवमेंट। दैट मे बी अनदर रीजन टू कीप दीज एट बे। Spent the whole day eating motorway junk and went to bed and my head was swollen. I'm going to get physically used to it so I don't wake up every morning feeling hungover because of the salt and the sugar and that. And the fact I haven't done a poo in 48 hours. तो भाई साहब को 48 आवर्स 2 दिन से पूप नहीं आई, कितना अनकंफर्टेबल फील होता है उसमें आपको भी पता है। उसके साथ इनको ब्लोटिंग हो रही है, फेस ब्लोट हो गया, स्टमक ब्लोट हो गया, ही इज फीलिंग इट। वेल, कॉन्स्टिपेशन की तो हम बात कर चुके हैं, बट ब्लोटिंग क्यों हो रही है? आपने भी ये देखा होगा कभी, अगर आप रात को कुछ ज्यादा सोडियम वाला खा लेते हो या कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खा लेते हो जिसके अंदर बहुत सारे कार्ब्स हैं, द नेक्स्ट डे यू फील लाइक यू हैव रिटेन्ड वाटर। कहीं ना कहीं आपको स्वोलन फील हो रहा होगा, ब्लोटेड फील हो रहा होगा। यू माइट इवन सी योर नेक और योर फेस ब्लोटेड। सोडियम आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कराता है एंड दैट मे बी अ रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग टू हिम। इससे ठीक कैसे होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करो अपनी डाइट में, पानी पीना शुरू करो और ज्यादा, थोड़ी सॉल्ट इनटेक कम कर दो अपनी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। It's one of my 5 a day, so it's healthy and it's actually green on the traffic light system for saturates and sugars. So this has all the appearances of a healthy meal. Some foods that look pretty healthy can still count as ultra-processed foods because they're industrially produced and have multiple chemicals in the ingredients list. High fiber, source of protein, gluten free.
सो वेरी ट्रू। जब मैं मायामी में था, जब मैं वहां फ्लाइंग कर रहा था, मैं भी ऐसे पैकेट्स लेके आता था। पैकेट्स मिलते थे आपको वॉलमार्ट में 24 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वाले विद 500-600 कैलोरीज। एंड उस टाइम मेरे को लगता था ये बहुत अच्छे हैं, मेरे को अच्छा प्रोटीन मिल रहा है इसमें। आप $4 से $6 के बीच का एक बॉक्स लेके आओ, माइक्रोवेव करो एंड खा लो, रेडी टू ईट। जब मैंने उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़े 2-3 महीने के बाद, तब मेरे को पता चला कि कितना प्रोसेस्ड है वो, एंड तभी इतना सस्ता मिल रहा था वो। द इंग्रेडिएंट्स ऑब्वियसली weren't फ्रेश एंड बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स भी थे उसमें। उसके बाद भी पेट नहीं भरता था एंड 400-500 कैलोरीज ऐसे ही आराम से आ जाती थी फॉर ईटिंग नथिंग। ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, बट मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि 24 to 25 ग्राम्स प्रोटीन उसमें था भी एंड अच्छी क्वालिटी का भी था कि नहीं। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, अगर मैं रॉ मटेरियल्स लेके आता एंड उसको बनाता, वो मेरे को ज्यादा सस्ता भी पड़ता एंड अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी मिल जाता। I'm 3 weeks into my 80% ultra-processed food diet to measure how it affects my body. And there's only 7 days to go. Time for some pudding flavoured with delicious potassium sorbate. You can really taste the potassium sorbate. I'm not enjoying it, but I can't stop. Sound like married. It's 4 a.m. I've had to come to the kitchen. I can't sleep. I've got heartburn. I've got a headache. I feel like eating more food. So he has a heartburn, acidity हो रही है उनको, सिर दर्द हो रहा है, फिर भी और खाने का मन कर रहा है. This is what such food can do to you. Well, let's start with how you were when we started. So Okay. 4 weeks ago. Magnificent. This is- What would you say? A standard man in early middle age? Yeah, that is you. After. I have the increasing man Yeah. boob. And also your stomach looks quite... Yeah, Your weight went up by 6.5 kilograms in 4 weeks. that's quite a lot, isn't it? And your body mass index went up by 2 points, which took you into the overweight range. And then the body fat went up by 3 kilos. So in these 30 days, Dr. Chris ने gain किया 6.5 kilos, in which 3 kilos was pure fat. It's pretty visible before and after वाली pictures में कि chest and stomach पे बहुत ज़्यादा fat gain किया है, उस time पे bloating भी है. अब usually BMI मैं individual पे मानता नहीं हूँ, because it's made for a group of people and एक specific बंदे के लिए BMI use करना फालतू है. BMI आपके weight और height के हिसाब से आपको बताता है कि आपका क्या range है. वो ये consider नहीं करता कि आप में कितना पानी है, कितना muscle है, कितना fat है. That's why I think BMI is not for individuals. Getting your fat percentage checked like he did is a better way to see your progress. 30 days में 3 kgs of pure fat and वो सिर्फ तब खा रहे थे जब उनको भूख लग रही थी. इससे ये देखने को मिलता है कि ऐसे खाने कितना easily आपको आराम से सरप्लस में ले जा सकते हैं without you knowing. अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, सबसे पहली चीज आपके पास उसका एग्जैक्ट कैलोरी नहीं होगा, बिकॉज हर जगह पे अलग तरीके से प्रिपेयर होता है. So you will not get the exact calories कि उसमें कितनी है. And दूसरी चीज हाइपर पैलेटेबल फूड्स. ये खाने हाइपर पैलेटेबल हैं तो आप ज्यादा खा पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पेट भर गया है. Next are my hormone levels. I'm particularly interested in the ones that tell my body if I'm hungry or full. Have they changed? And what we found is that the hunger hormone in your blood went up by 30% once you've been on the diet. So that's why I felt hungrier. Yes. And what about the hormone that makes me feel full? We saw a decrease in the fullness hormone. So you've got a double whammy. You've got an increase in the hunger hormone and a decrease in the hormone that's telling your brain that you've eaten. हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन एंड जो हार्मोन आपको फुल फील कराता है वो होता है लेप्टिन. सो आफ्टर 30 days of having this kind of a diet, ये देखा गया कि जो ग्रेलिन था वो 30% बढ़ गया, तो ज्यादा भूख लगने लगी, एंड जो लेप्टिन था इट रिड्यूस. सो इट्स वर्स ऑन बोथ साइड्स. ही नेवर फेल्ट फुल एंड ही फेल्ट hungrier all the time. Finally, Professor Batterham wants to know if eating a high ultra-processed food diet has affected my brain. We've repeated the scan from a month ago to compare the results. Blue is how areas of your brain talk to each other before the diet. And the red are the new functional connections in your brain after 4 weeks on the diet. So everything that's red is a new connection between parts of your brain that wasn't there before. Comparing these scans has revealed that my diet has linked up the reward centers of my brain with the areas that drive repetitive automatic behavior. So eating ultra-processed food has become something my brain simply tells me to do without me even wanting it.
Shockingly, this is something you might see in a person with addiction. So this was something weird जो मैंने पहली बार देखा है. डॉक्टर क्रिस के दिमाग में न्यू कनेक्शंस थे. ब्रेन में जो डोपामीन था, इट गॉट रिलीज्ड एवरी टाइम ही हैड जंक फूड. बेसिकली ब्रेन ऐसे कंडीशन हो गया कि जब भी वो जंक फूड खाते थे उनको ऐसा लगता था कि उनको कोई रिवॉर्ड मिला है. तो कंडीशनिंग क्या करती है, जब भी उनको रिवॉर्ड चाहिए होता था, खुश फील करना होता था, उनका ब्रेन उनको सिग्नल करता था कि हैव द जंक फूड. सो दे गॉट लिंक्ड, दे गॉट कंडीशनड. जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके साथ भी यही होता है. अब ऑब्वियसली डॉक्टर क्रिस के साथ इस लेवल पे नहीं हुआ, बट हु नोज लॉन्ग रन में अगर आप यही डाइट खाते रहो तो आपके साथ क्या हो सकता है आपके ब्रेन में. अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर इतनी रिसर्च नहीं है कि हम बता पाए कि कंक्लूजन क्या है. If you just took people and scanned them at 4-week intervals, you don't normally see a bunch of connections change. That does seem to be a real result. Yeah. This is terrifying, isn't it? I mean, I was really surprised. didn't Surprised. expect this when I came in this morning. No, Are you surprised by I was this? surprised by the changes in the MRI scan. Really surprised. With just 4 weeks. My concern is that children's brains are still developing and they're much more malleable than mine, which means the changes are likely to be even greater. There are lots of children in this country who are on my diet from a very early age. Do we have any idea what that's doing to them? No. But the other thing is, Chris, I'm a mum, and when I look at what I've been feeding my children, then actually they were having quite a lot of ultra-processed food. Really? Even as an obesity expert, it's made me far more aware about what I'm actually giving my children. So this is actually very scary. जिस लेवल पे आजकल सब कुछ प्रोसेस्ड मिल रहा है, सब इतना प्रोसेस्ड खा रहे हैं, घर में खाने का टाइम नहीं मिल रहा, ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे कुछ ऑर्डर करके खा रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फास्ट फूड फास्ट मिल जाता है, बट जो हेल्दी फूड है वो बहुत महंगा है, एंड खाना बनाने का टाइम नहीं है लोगों के पास. हमारे ब्रेन में जो चेंजेस हो रहे हैं ऐसे खाने खा के रोज रोज, उनके बारे में हमें पता भी नहीं है. ये तो एक छोटा सा वीडियो दिखाया मैंने आपको. आजकल बच्चे भी यही करते हैं, घर का खाना खाना नहीं है, पिज्जा दे दो, फ्राइज दे दो. इवन दो ये एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है एक बंदे पे, इट शुड स्टिल मेक यू थिंक. We need to clean up our diet. Obviously मैं totally against नहीं हूँ. मैं खुद बोलता हूँ कि 20% जो आप खाते हो दिन में, you should include your favorite foods. Why? Because आपको consistent रहना है अपनी डाइट में. 80 to 90% अच्छा खाओ, घर का खाओ, whole foods खाओ, and जो 10 to 20% बचता है वो अपनी फेवरेट चीजें ऐड कर लो if you want to. सोचना इसके बारे में एंड कमेंट करके मेरे को बताओ what you think about the video. ऐसी वीडियो पहली बार ट्राई करिए तो अगर पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज, बहुत हेल्प मिलती है. आई रियली होप दिस हेल्प्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइज. Be safe and I love you all.